Good afternoon, everyone. My name is Saloni Dinesh Patle, and I am a student of B Farm third year at Nagpur College of Pharmacy. And today I will presenting sterilization method. First of all, what is sterilization? Sterilization can be defined as any process that effectively kills or eliminates transmissible agents like fungi, bacteria, viruses, and prions from a surface, equipment, food, medications, or biological culture medium. स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो किल करती है और एलिमिनेट करती है ट्रांसमिसेबल एजेंट्स लाइक फंगाई बैक्टीरिया वायरसेस एंड प्रियॉन्स फ्रॉम अ सरफेस इक्विपमेंट फूड मेडिकेशन और बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया. Sterilization of culture media. The constituents of culture media is water and container contribute to the contamination by vegetative cells and spores. जो कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं कल्चर मीडिया के लाइक वाटर एंड कंटेनर जो कि कॉज कर सकते हैं कंटामिनेशन बाय वेजिटेटिव सेल्स एंड स्पोर्स से. नेक्स्ट, द मीडिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन बिफोर यूज इन फर्मेंटेशन. सो मीडिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम रहना चाहिए फ्रॉम द कंटामिनेशन से. Next, sterilization of the media is most commonly achieved by applying heat and to a lesser extent by other means like physical method, chemical treatment and radiation. Sterilization of the media हम मोस्ट कॉमनली अचीव कर सकते हैं बाय द हीट एंड लेसर एक्सटेंट बाय द फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड रेडिएशन मेथड से. मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन. There are three methods of the sterilization. First, physical sterilization. Second, batch sterilization. Third, continuous sterilization. So, in the physical method, there are three types. First, heat sterilization. Second, radiation. Third, filtration. Heat sterilization. Heat sterilization is the most widely used and reliable method of sterilization involving destruction of enzyme and other essential cell constituents. हीट स्टरलाइजेशन इसको मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है और ये रिलायबल मेथड होती है फॉर द स्टरलाइजेशन के लिए. और हीट स्टरलाइजेशन मेथड ये डिस्ट्रक्शन करता है ऑफ द एंजाइम एंड अदर सेल कंस्टिट्यूएंट्स जो कि प्रेजेंट रहते इन द बैक्टीरिया और फंगाई में. Next, this method of sterilization can be applied only to the thermostable products, but it can be also used for moisture sensitive materials. ये मेथड सिर्फ हीट स्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल होती है बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स. नेक्स्ट, देयर आर two methods involved in the physical method. First, dry heat sterilization. Second, moist heat sterilization. First, dry heat sterilization. It employs higher temperature in the range between 160 to the 180 degrees Celsius and requires exposure time up to 2 hours depending upon the temperature employed. इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो बिटवीन 160 डिग्री सेल्सियस टू दी 180 डिग्री सेल्सियस और ये 2 आवर्स टाइम रिक्वायर करता है फॉर द किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया और द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए. The benefit of dry heat includes good penetrability and non-corrosive nature, which makes it applicable for sterilizing glasswares and metal surgical instrument. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ये बेनिफिशियल होती है क्योंकि इसकी गुड पेनेट्रेबिलिटी एंड ये नॉन कोरिजिव नेचर के होते हैं जो कि मेक करते हैं फॉर द स्टरलाइजिंग ऑफ द ग्लासवेयर्स एंड मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. It is also used for sterilizing non-aqueous thermostable liquids and thermostable powder. इसका also यूज़ किया जाता है for the sterilizing non-aqueous thermostable liquids and thermostable powders के लिए. Next, dry heat destroy bacterial endotoxin or pyrogens which are difficult to eliminate by other means, and this property makes it applicable for sterilizing glass bottle which are to be filled aseptically. ड्राई हीट डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स और द पैरोजन जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं टू एलिमिनेट एंड यही प्रॉपर्टी मेक करती है फॉर द स्टरलाइजिंग ग्लास बॉटल्स के लिए. एग्जाम्पल, रेड हीट, फ्लेमिंग हॉट एयर ओवन. Second, moist heat sterilization. Moist heat sterilization is one of the most effective methods of sterilization where the steam under pressure act as a bactericidal agents. मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होती है फॉर द स्टरलाइजेशन के लिए और ये बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करती है बिकॉज ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ये प्रोड्यूस करती है स्टीम अंडर प्रेशर जिसके कारण बैक्टीरिया आर किल्ड. नेक्स्ट,
In this method, the microorganisms are killed by coagulation their proteins, and this method is much more effective than dry heat sterilization, where microbes are killed through oxidation. और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड होते हैं बाय कैगुलेशन ऑफ प्रोटीन, और ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होती है एज कम्पेयर टू दी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. Next, it is used for heat sensitive materials and materials through which steam is permeable. इसका यूज़ किया जाता है फॉर दी हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए और ऐसे इक्विपमेंट्स और दी मटेरियल जिसमें स्टीम पास हो सके. Next, moist heat can be used in sterilization at different temperatures. First, temperature below 100 degrees Celsius. Second, temperature at 100 degrees Celsius. Third, temperature above 100 degrees Celsius. Example, dry saturated steam autoclaving. Thank you.